Hello and welcome back, folks. You are watching the eISL Season 2 and brought to you by Nodwin Gaming. We are already done and dusted with our first matchup of the evening, where we did see Mumbai City FC taking on with those 3 points and moving ahead. And now is going to be another interesting match as ATK Mohun Bagan's arch nemesis, arch rivals, you can call them, East Bengal FC. They're going to have their hands dirty against the players of Hyderabad FC, who are in a whole different form of their own. And this time, joining along with me as always, going to be TT. And TT, you did express your intent that East Bengal FC is your favorite club, and now they're going up against Hyderabad FC, which houses two big giants like Genesis and Watsi. How do you like your या chances against them? आई थिंक अगर मैं इस पूरे टूर्नामेंट के फॉर्म वाइज बात करूं तो ईस्ट बंगाल के लिए इट विल बी टफ बट लेट्स सी लाइक क्या होता है मुझे तो लगता है कि ज़रूरत है आज स्टेबिलिटी की थोड़ा सा देख के खेलने की डिफेंस के ऊपर नज़र डालना होगा ज़्यादा अगर पेस में खेलने जाएंगे फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं क्योंकि जो फर्स्ट मैच है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है Let's take a look at the matchups, right? Let's not delay any further. Let's see who goes up against who. And let's see. All right, so we've got a few switch ups in the playing order. This time, Beno7 will start off, and he's going to go up against Genocide. And we know how devastating Genocide was when he played last time and absolutely clobbering down his opponents. So I think it was Naveen whom he beat 3-0. And mind you, ladies and gentlemen, that Naveen was, in fact, is still the defending champion of eISL. And for the third game, we've got Akshat and Warsi going up against each other. And in between, we do have a co-op matchup. And well, let's not keep you waiting, right? TT, let's directly head into match number one, game number one, whatever you may call it, because it is going to be again an interesting one. Beno7, the knight in the shining armor for East Bengal FC, the player who's always saved the day for his club, and again, being retained by the club. And now we understand why he is. Interesting 4-4-2 formation against a 4-2-4, I believe. Like we've discussed, a new formation that is currently running in meta. A lot of professional athletes are inclined towards it. Let's see what happens. यार लेट्स सी क्या होता है बट अगर हम लोग बात करते हैं पिछले गेम की जो कि इस बंगाल एससी की तरफ से खेला गया था तो पिछले में 3-0 से एक हार मिला था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के Right. ऑपोजिट पे सो इस बंगाल एफसी उनको ज़रूरत है कि वो इधर से एक एटलीस्ट बेहतर कमबैक करके दिखाए क्योंकि नेबर्स तो पिछले मैच पे उतना खास परफॉर्म नहीं कर पाए सो इस मैच के अंदर कोशिश यही रहेगा इस बंगाल की तरफ से कि वो एटलीस्ट लाइक पॉइंट्स इधर से निकाल के लेके जाए क्योंकि आज इस बंगाल के लिए तीसरा गेम है इसके पहले एक ड्रॉ हुआ है एक हार चुके हैं सो आज का ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर पॉइंट्स टेबल पे पोजीशन जो है वो सही जगह पे लेके आना है बट आपका ईस्ट बंगाल एफसी का जर्सी कहाँ है टीटी? है साइड पे आप पहनते क्यों नहीं हो? वो एटलीस्ट मैच के टाइम तो पहन ही सकते हो, बट कोई बात नहीं। अगले मैचअप में विल या इंश्योर कि आप अपने जर्सी के साथ ही आओ, ताकि आप जितने भी ईस्ट बंगाल एफसी के फैंस को भी पता लगे कोई उनका अपना यहाँ पे डेस्क पे बैठा है। बट मैं तो जो भी अच्छा खेले उसके तरफ हूँ। एंड ईस्ट बंगाल एफसी is one of the iconic clubs in not just eISL but also in the ISL. और ESL के अंदर आई थिंक इनका जो पिछले साल का रन था that was pretty amazing, right? Ankit Gupta, Beno7, what a storyline these two wrote, right? They were dominating the top spot for literally I think 3 quarters of the entire tournament, only to go and fall off in the playoffs. And that was quite hurting for me, because I was a huge Ankit Gupta fan, because Ankit Gupta was a player like he sort of used to play FIFA but not a lot competitively, and not a lot of players knew a lot of things about him. And suddenly this player comes with all that flair and finesse and starts scoring goals for fun, like 6 goals, 7 goals. That was Ankit Gupta's magic. And it's so hurting that he's not going to be playing, or rather did not choose to play in this season's eISL. But with his replacement for Akshat,
another very promising prospect, to be honest, because previously he used to play for Kerala Blasters FC, where he was partnered with Lokmanu, and he took a lot of teachings from him. And Lokmanu, like I said, is an amazing teacher. He loves to, coach the players, and how he just nourished Akshat over there. We've seen him improve, right? Especially against that matchup with Saraj, where he was like 5 goals down, still managed to take it down to the wire. And I think if I remember, the scoreline was 4-2. I mean, yeah, it was 4 goals down. The other managed to score 2 more. But now we've got the match going on. It is going to be East Bengal FC in their whites against Hyderabad FC, who are from right to left in their blue. या एंड लेफ्ट टू राइट हम लोग को इस बंगाल एफसी देखने के लिए मिलेंगे वाइट जर्सी के ऊपर, बट बहुत शानदार शुरुआत हालांकि हुआ है, प्रेशर बनाने की कोशिश चल रहा था, लेकिन वी नो कि जेनेसिड की तरफ से बहुत बार कुछ ऐसे पासेस निकल के आते हैं जो कि शायद ही कोई एक्सपेक्ट करेगा, तो वो चीज़ें थोड़ा सा देख के खेलने की ज़रूरत है। कैप्टिविया लेफ्ट साइड के ऊपर एंड एज अ फुल बैक, इधर ये पास शायद वो नहीं करना चाह रहे थे, शायद ऊपर की तरफ पास देने की कोशिश था, बट गलती हो गया। वर्जिल वैन डाइक बहुत ज़्यादा एडवांस करके आए थे ग्राउंड के ऊपर, लेकिन मिस पासेस दोनों ही तरफ से हो रहा है। हैदराबाद एफसी धीरे धीरे करके एक बार फिर से, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं, कोशिश कर रहे हैं कि वो 1-2 करते हुए इधर मौका बना पाए। कैप्टिविया बहुत ज़्यादा एडवांस करते हुए लेफ्ट हैंड साइड पे, बट तहलीत वन मोर टाइम इंटरसेप्ट कर चुके हैं इस बॉल को। सो जार्सिनियो की तरफ से रन तो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी 4 डिफेंडर्स पहुंच चुके हैं, तो उधर से रन आगे निकाल के कुछ फ़ायदा नहीं था इस बंगाल के लिए। एंड बेनो 7 की अगर बात किया जाए तो बहुत सोच समझ के खेल रहे हैं बेनो 7। आज उनका स्ट्रक्चर बहुत सही लग रहा है मुझे, एटलीस्ट अभी तक तो, पहले शुरुआती 13 मिनट के अंदर। एंड उनका स्ट्रक्चर देख के लग रहा है कि इनके स्ट्रक्चर को तोड़ना उतना ईजी नहीं होगा, वो चाहे काउंटर हो या फिर लाइक कोई अगर वो गलती नहीं करते हैं तो स्ट्रक्चर तोड़ना बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। फिलहाल के लिए बॉल कंट्रोल है हैदराबाद एफसी के पास। रोनाल्डो विद द बॉल रन निकाल रहे थे। जजीनियो ऑन राइट साइड, अभी थोड़ा टाइम जरूर लगेगा पहले अटैक में। I think that is where Genesid really flourishes, right? He takes his time building up that attack, kind of constantly just forcing, to try and tend for these charge tackles. And then he finds that opening and could have, showed intent on trying to take a shot. But yeah, I think Beno 7 was quick to read through his strategies, made sure did not rush in with his centre backs over there, and as a result managed to avert that threat. But right now, it's kind of an even matchup where we are seeing two style of play where, Beno 7 wants to attack from the flanks, whereas Genesid is taking a sweet time, building up the attack. As his left back does have Captivia, and I think the new Foot Fantasy card. And we've seen a lot of changes being made by the players in terms of their left backs. We just saw Alfonso Davis come in. We have seen a lot of Theo Hernandez. That has been the standard go-to pick, and along with Captivia. I'm wondering as this tournament goes on, as the new cards keep on releasing, we might get to see a few more. But now Genesid looking promising with his attack, went in with a step over, now goes for that cutback towards Captivia, still being patient and calm, and does not want to miss that opening. Finally gets it. A beautiful, beautiful switch to his other foot, and tried to go for the shot, but defended by the goalkeeper. Went out for a corner, and Jarzinho, not a green time shot, but yeah, Genesid, he is showing signs of hunting for that goal. या बहुत शानदार कोशिश था इधर, एंड कोशिश जो है वो अभी तक कैपिटलाइज नहीं हुआ था, लेकिन इस बार हो चुका है। एक गलती की वजह से इधर वर्जिल वैन डाइक चार्ज तो किए, लेकिन उनके पैर पे बॉल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से बॉल गया रूड हुलीफ के पास, एंड इट इज हिस्ट्री। 1-0 फिलहाल के लिए हैदराबाद एफसी की तरफ से, एंड हैदराबाद एफसी ऑलरेडी लीड बना चुके हैं। तो जो स्टेबिलिटी अभी तक दिख रहा था, मुझे लगता है कि वो अभी थोड़ा टूटने वाला है, एंड बेनो 7 डेस्परेटली आगे जाएंगे स्कोर करने के लिए, लेकिन वो चीज़ सेम तरीके से इनके डिफेंस के ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा, ऐसा मुझे लगता है। एंड देखिए वर्जिल वैन डाइक को बहुत ज़्यादा
एडवांस किया गया था, बट थ्रो मिला है इधर ईस्ट बंगाल एफसी को। वैसे कभी-कभार ऐसे हो जाता है कि टचेस जो है वो हम लोग को इतने छोटे दिखते नहीं है खाली आँखों से, बट या विएरा को खिलाया जा रहा है। बहुत दिन बाद हम लोग विएरा को देख पा रहे हैं इधर ग्राउंड के ऊपर। I think we've seen a few players going for Vieira. There have been a few, it's been uncommon, but not really rare. And it just comes down to player preferences, right? Now we have even seen Ibrahimovic come in as a super sub, the Centurion card, beautiful one, 93 rated. And then we have seen a few Christopher Nkunku's also coming in, that 5-star left and skill moves. But look at that. Oh, I think that was a little bit of a misclick maybe from Genesis, because he could have directly gone for a shot with Ronaldo after I think R9 after performing that skill move, but was reluctant, and I think that chance was just folly. But either ways, I mean, like you said, I think if you can talk about this particular game for what we are witnessing so far, Hyderabad FC, they've been in good control of the game, and Ben 07, this could be a good possible chance, needs to take that shot, and he does, and he scores that equalizer, and Genesis kind of stunned as how could he let the defense so open with Mbappe, an outside footed shot, beautifully taken, look at that, and just being skipped, but it's all right. So I think just when we were kind of starting to rule Ben 07 out of this competition, he's like, hey guys, I am the king of comebacks, I've done that in the past and today as well. So now we are back to one each apiece. Let's see, by the end of the first half, can we see another one possibly, and the chance has been built up. Mbappe looking towards passing, maybe R9, and he does. Wow. Takes a shot, but Van der Sar for the rescue. What is going on, TT? वाओ, क्या बेहतरीन फॉर्मेशन के साथ इधर अटैक किया जा रहा है। एंड कोशिश इस बार देखिए, इस बार नहीं, शुरुआत से यही रहा है कि वो एक्सप्लॉइट करे विंग्स को। एंड क्या किया, फिर से मौका, फिर से गोल। व्हाट अ कमबैक। हाफ टाइम के पहले 3 गोल देखने के लिए मिला इस पूरे गेम से, जिधर एक गोल शुरुआती में आया था हैदराबाद एफसी की तरफ से, बट उसके बाद बंगाल एफसी मानो कि वो क्या शानदार एक कमबैक करके आए हैं। एंड इस बार देखें, लेकिन इसके पहले अगर हम लोग बात करें तो विंग के ऊपर पास खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस बार थोड़ा कम हो रहा है। इस बार थ्रू खिला रहे हैं, पास नहीं थ्रू खिलाया जा रहा है, एंड थ्रू की वजह से इधर बॉल मिल रहा है और वो रुक नहीं रहे, वो बहुत जल्दी कटिंग नहीं कर रहे उस प्लेयर के साथ। वो कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्टली एकदम एंड ऑफ द बैक लाइन लेके जाए, फिर जाके पास कर रहे हैं, एंड उसके बाद वो मौका मिल रहा है। एंड ये बहुत पुराना टैक्टिक है, बहुत दिन से यूज होता आ रहा है, और वो चीज इधर भी यूज होता हुआ दिखा, और उसका आउटकम भी आया है इस बंगाल एफसी के लिए एज ऑफ नाउ। तो शुरुआत तो काफी अच्छा रहा है। फर्स्ट हाफ शुरुआत हुआ था हैदराबाद एफसी के डोमिनेशन के साथ, बट जो खत्म हुआ उस पे हम लोग को ईस्ट बंगाल एफसी राज करते हुए दिखे। बट लेट्स सी जो सेकंड हाफ है वो किस तरीके से जाएगा। Whatever sails a boat and whatever works for East Bengal FC, they have made it happen, and this could be a huge blow for Hyderabad FC if they lose their individual matchup, and Genesis needs to, rethink his strats. I'm kind of still surprised on both the occasions we saw those goals being scored. Where was the defense? Where was the man marking on R9 in that second goal that was scored, and the second attempt also that was taken, which could not get into, which could not be converted. I mean, Genesis really needs to work out on that, but now he's focusing on his attack. The keeper moving towards that near post, but the shot was taken to the far post, and Genesis is right back in. Just when we were like thinking that yes, maybe Ben 07 has figured out a way to deal with Genesis, he strikes back and again has leveled up the scores. It's 2 each apiece, and East Bengal FC, they have to find out other ways now to make a comeback inside this game. Yes, and finally, like just चालू हुआ second half and एक big blow आता हुआ from Genesis, but Ben 07 उनको थोड़ा सा जो है वो देख के खेलने की जरूरत है इस बार, क्योंकि जब कमबैक आता है जेनेसिस की तरफ से वो बहुत जोरदार आता है। सो या थोड़ा सा इधर अपने डिफेंस को
प्रॉपर्ली रखना होगा लेफ्ट हैंड साइड से थियो हर्नांडेज एडवांस करते हुए क्लोज पहुंच चुके थे इधर रोनाल्डो, बट रोनाल्डो की जगह पे रोनाल्डिनियो को दिया गया था। वर्जिल वैन डाइक, रोडोलित एंड पूरे लेफ्ट साइड को यूज करने की कोशिश, जबरदस्त हेडर, बट वैन डे सार इधर मौजूद, जिसकी वजह से ये अटेम्प्ट तो गोल पे कन्वर्ट नहीं हुआ है, बट खतरा अभी तक टला नहीं है। Look at the number of players defending that. They know that they cannot give him that entry inside that final third. So as a result of which, Genesis is opted to play on the back lines right for now. I mean, I think back to his previous strategy. Just keep on passing the ball, force one of the players to make a move. But Vieira comes in for the rescue. Jarzinho with a beautiful driven through ball, and there we go with Mbappe. Could have scored, but whiffs it. Oh my goodness, that one extra move was not needed. Maybe could have taken a shot directly. Could have gone in. Oh, Ben 07 might be kicking himself in the feet over there with what he did, as Genesis looks to punish him with Pele. Passes it on towards Bellingham, back and forth, and now, oh, takes that shot, and it is a goal. What a beauty, what a screamer that was. But is that a goal or is that an offside? No, it's not a goal. Not an Maybe it was I a thought, back. what? What is going on? Yeah. I'm done. I think वो जो शॉट था वो पीछे नेट Felt पोस्ट like a जाके goal. लगा था। Yeah, it was felt like a goal, but शायद ये बैक था, एंड वो तो अभी पता चली। Yeah, it was a back, Aw. and वो जो पीछे नेट पोस्ट रहता है उस पे जाके लग के डिफ्लेक्ट किया था, बट चांस काफी बेहतरीन बना, बहुत बहुत ज्यादा लाजवाब चांस बना, बहुत क्लोज था, बट फिनिश नहीं हो पाया अभी तक। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन गेम चलता हुआ, आई थिंक कोई भी फैन के लिए, दोनों ही क्लब्स की अगर बात किया जाए फैंस की, तो दोनों ही टीम्स के फैंस जो है वो बहुत ज्यादा रहेंगे इधर एक्साइटेड। बट फाइनली हैदराबाद एफसी जो एडवांटेज के साथ, जो डोमिनेशन के साथ उनका शुरुआत हुआ था फर्स्ट हाफ का, वही सेम चीज एक बार फिर से दोहराते हुए सेकंड हाफ के ऊपर भी 2-1 से पीछे थे, जस्ट 20 मिनट्स के अंदर 2 गोल स्कोर किए, एंड फिर से बैकफुट पे ढकेल चुके हैं इधर ईस्ट बंगाल एफसी को। Okay. At least that one went in because I think by the stroke of that second half whistle, we've seen Hyderabad FC being really pressing, really creating so much of those chances. They've gotten the better of the possession also. Benno 7 has been pushed back against the wall, and it is Genesis trying a lot of crafty methods of scoring goals, and he has. I'm still, trying to recover from how was that not a goal, but that was such a good effort, and we could see, what Genesis is doing. He's got a plethora of moves in his arsenal. He can directly go for a shot. He's opting for those extra passes into skill moves. He's going for those skill moves. In that previous attempt, we saw Ronaldinho. Maybe I think was a heel to wheel or maybe an L2 fake. If I could see that again, could break it down. But regardless, I mean, for where we stand right now, Hyderabad FC have edged over East Bengal FC right now. 3-2 is the scoreline, and barely just 22 minutes remaining for this matchup to end, where Benno 7 not just has to recollect his thoughts, but has to score one more goal at least to ensure that this fixture ends in a draw. Otherwise, it's going to be troubled waters. As now, look at Genesis making that run, just whizzing past, and now he'll pass it on towards Bellingham, who decides to, well, again, take his time and beat that attack up. Few players, with that run, but Mbappe, a beautiful step over to a ball roll, now wants to pass it back towards Bellingham, goes for the feint, and now a shot. Look at that. Wow. Look at the quality of goal. Genesis FC, this guy, he is spitting fire. And East Bengal FC, they are just burning down, as Hyderabad FC are now 4 goals ahead, and it looks like possibly could be lights out with the amount of time that remains. What a beautiful goal it was, and देखिए जिस तरीके से इधर अपने ड्रिबलिंग स्किल्स दिखाए,
इंसेन था एंड फिनिशिंग तो ऑब्वियसली उस जगह से फिनिशिंग तो होगा ही, लेकिन जो ड्रिबलिंग था उसी से ही आधा काम पूरा कर चुके थे। तो 4-2 इस गेम के अंदर सब कुछ था। शुरुआत से अगर बात किया जाए, दोनों ही टीम की तरफ से स्पार्क था, लेकिन आखिर में आके हैदराबाद एफसी जिस तरीके से इधर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जस्ट बहुत बहुत ज्यादा देख के इधर मजा आता हुआ। एंड इसी वजह से हम लोग बात भी कर रहे थे कि जेनेसिस जब भी खेलते हैं, इनका कुछ अलग तरीके का आउटकम निकल के आता है। एंड ड्रिबलिंग सक्सेस की अगर बात किया जाए, 98% इधर देखने के लिए मिल रहा है हैदराबाद एफसी की तरफ से। एंड ये करके दिखा पाना बिल्कुल भी इजी नहीं है। एंड 8 शॉट लिए हैं उन्होंने, 75% शॉट ऑन गोल। तो इससे भी पता चलता है कि कितना ज्यादा प्रेशर अभी के लिए बना के रखे हैं। बट जो पिछला गोल था वो बेलिंगम की तरफ से आया था, एंड बेलिंगम शूट पावर जो रखते हैं वो बहुत शानदार। बट रोनाल्डो के जगह पे हॉलैंड एंड वेड़े की जगह पे बेलिंगम को इधर इंट्रोड्यूस किया गया। तो ध्यान हम लोग हॉलैंड एंड इंकुकू आते हुए देखने के लिए मिला। एंड मिलिटाओ के जगह पे लूशियो को भी लेके आया गया है। सो ये जो चेंजेस है, ये चेंजेस बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं इस बंगाल एफसी के लिए। व्हाट अ थ्रू बॉल, हालैंड शॉट नहीं, पास किया गया। आई थिंक मुझे लगता है शॉट ले सकते थे बाय द वे। And we know Haaland can score from that Yeah. area, and this is a team of the year 12th man card. And if Haaland was not already broken, this even makes things worse. But it's going to be such a mountainous task for Shantan to make a climb right now, to make a comeback, because Genesis is in absolute control of this game. And the best part is he's never panicked for a second. Look at that composure, never shies away from building a play. If he feels like there's no passing avenues, just makes a back pass, keeps holding, keeps constantly, shuffling down and recycling the ball. And the moment he gets that opening, a moment, Beno 7 makes that mistake of charging, because now this is a point where you do not have a lot of time remaining. This is a point where you see that impatience creeping in. Look at Rudulit, who just made that, charge, and he's out of options. He has to take possession over the ball. And, Genesis, he does not want to let go of it, right? Now he's gotten in Christopher Nkunku, and through that right wing would want to look for more passing option, as Bellingham, again some recycling being done over there with Ruud Gullit. He's got all the time in the world, but can't say the same for Shantan, as he looks worried. And I think ये एक yes, जिसके बारे में बात करें तो ऑफसाइड हो सकते हैं, एंड ऑफसाइड हुआ भी। थोड़ा सा पास निकालने में टाइम लगा चुके थे, और कुछ मिलीसेकंड्स पहले अगर रिलीज करते तो शायद एक वर्ल्ड क्लास लेवल अटैक बन सकता था, जो कि अभी के लिए नहीं हुआ। 89 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जिधर से सिर्फ आखिरी एक मौका मिल सकता है इस बंगाल एफसी को। अगर पासिंग एक्यूरेट रहा फिर भी ये मैच नहीं जीत सकते। बात कर रहे थे पासिंग की, वो एक्यूरेसी उतना कुछ खास नहीं देखने के लिए मिला इस बंगाल की तरफ से आखिर के 15-20 मिनट के अंदर। एंड उसी का ही प्रॉपर फायदा उठाते हुए इधर हैदराबाद एफसी। एंड देखिए बॉल कंट्रोल, देखिए एक बार जेसेट की तरफ से एम्बापे से कुकू, बट नहीं कर पाए फाइनली। गेम पॉइंट हैदराबाद एफसी 4-2 के साथ एक लाजवाब विक्ट्री। शुरुआत हुआ हैदराबाद एफसी के एडवांटेज के साथ, 1-0 किए उन्होंने। फिर फर्स्ट हाफ खत्म होते होते इस बंगाल एफसी 2-1, एंड फिर से हैदराबाद एफसी की तरफ से बैक टू बैक 3 गोल्स। इमोशनल रोलर कोस्टर था, बट एट द एंड ऑफ द मैच इधर इस बंगाल एफसी के लिए रिजल्ट्स पिछले मैच जैसे ही रहा। No wonder, TT, you being an East Bengal FC fan, but I'm pretty sure you enjoyed this game of football. Yeah. Especially, showcased by Genesis, with the way, the quality of those goals, right? I mean, he was 100% sure that's going to go in. There were so many chances created, and even there were moments where we felt like, his defense was a little loose, got opened up. You'd see in moments as such, like there was no marking for Mbappe. He just went in and took a shot. Even those next 2 chances that came up, his defense was a little over the place, and we felt it could have been too overwhelming for him at that moment. But comes the second half, suddenly we see Genesis again back in control over the game, and the second half was so badly dominated by him. The
for Shine, it was nothing less or nothing short of a nightmare of how Genesis was going through. And watching matches like this is something that gets our FIFA genes rolling. Like once the show ends, I get back to my controller, just try and replicate few of their moves, which isn't gonna happen quite so soon with the sheer quality of Genesis, and it takes years to master that art, and Genesis has done so. A little bit of an a little bit of a backstory on Genesis. He's one of those players who used to play for Mesut Ozil's football team back in the days for FIFA. I think was a part of M10, and now he's moved on. I think playing for a different club right now. But for now, as things stand in this eISL, Genesis FC representing Hyderabad FC has given them a beautiful lead. Now it is time, TT, for game number 2, which is going to be a co-op matchup, and hasn't been the strongest suit, because if I remember the last time they went up against Chennai FC, they lost this matchup. So this is something where I think they've had more than a week's time to prep up and improve their co-op, but now for East Bengal FC, they've got their backs against. They have to do whatever it takes to make a comeback and win this one. या एंड मेनली अगर हम लोग बात करें पिछले गेम के भी, सो उस पर भी कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के अगेंस्ट. सो उधर मुझे लगता है कि ईस्ट बंगाल एफसी भी शायद इधर काम करके आए होंगे, एंड अगर करके आए होंगे सो हम लोग को रिजल्ट दिख सकता है. तो ओवरऑल में अगर बात करते हैं तो दोनों ही टीम्स उतने कुछ खास नहीं है कोऑप के ऊपर, बट ये कोऑप जो गलतियां कम करेंगे आई थिंक वो जीतेंगे, क्योंकि गलतियां जो है वो कोऑप के ऊपर बहुत ज्यादा होता हुआ दिखा है अभी तक थ्रू आउट द टूर्नामेंट. एंड पिछले गेम की अगर बात किया जाए उस पर भी हम लोग को देखने के लिए मिला था. सो या कोऑप पे आपका सिनर्जी कितना ज्यादा बेहतर हो रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो मैच कुछ ही देर के अंदर चालू हो जाएगा. बाय द वे पिछला गेम सच में बहुत बहुत ज्यादा एंजॉय किया मैंने ओवरऑल अगर बात किया जाए. लाइक अगर मैं मेरे फैन को दर्द तो है, बट अगर मैं साइड में रखूं मेरे फैन को जो कि निकल के आ रहा है मेरे अंदर से, उसको अगर मैं साइड में रखूं तो ऑब्वियसली आपने एकदम सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से जेनेसाइड की तरफ से लाइक उधर स्किल्स सिखाया जा रहा था मेनली बॉक्स के अंदर जाके, एंड अटैकिंग थर्ड पे आप इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कैरी कर रहे हो, वो भी उस जगह पे जाके जिधर आपके सामने 2 डिफेंडर, वो भी वन डाइक एंड मिलिटाओ जैसे जो डिफेंडर, लूशियो जैसे डिफेंडर जो है वो अगर आपके सामने एंड उसके सामने भी आप ऐसे स्किल्स कर रहे हो वो भी कॉन्फिडेंटली, उसके लिए जो है वो कुछ अलग पोटेंशियल की जरूरत है. तो वो चीज हम लोगों को नजर आता है कि वो फियरलेस खेलते हैं और उसका प्रॉपर आउटकम देखने के लिए मिला. बट ये कोऑप बहुत बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इस कोऑप के ऊपर कोई भी प्रेडिक्शन हम लोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी तरफ जा सकते हैं. I think both the teams, like we kind of already discussed, right, haven't been the best of teams in the co-op matches. So this is where this is a good chance for maybe the players of East Bengal FC to make a comeback and try to steal a win, because you would not want Akshat moving into a battle that's already lost, right? He needs to have that win so that if he manages to defeat Warsi, then East Bengal FC can come out with a win. Because for all the East Bengal FC fans, let's a quick reminder: if Hyderabad FC win the co-op game, then they're going to win this entire matchup. So regardless of the outcome of the third game, it's not going to change anything at all. And Hyderabad FC, they might just get that victory that they're yearning for. So Hyderabad FC this time, the season has been really amazing in comparison to last time when I think Adi Zima and DK used to play for Hyderabad FC. Now Warsi has come in from Bengaluru FC. Genesis, a new entry into the eISL, and he's sort of been that flamboyant personality, that flair guy, right? Something which Ankit Gupta really put on the table every single time you watch this guy play. It's an absolute delight. But you know what, TT? It is kickoff time now. We've got East Bengal FC in their white kit from left to right against Hyderabad FC in their blue from right to left. You know what, TT? I'm really looking forward to a matchup between Genesis and Challenger. That would be one hell of a matchup, to be honest. फॉर श्योर. एंड उस पे तो मुझे लगता है कि सब लोगों का जो हार्ट है वो इतने जोर से बीट करेगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट हो सकता है. तो हार्ट की जितने भी मिसिंग्स है वो लेके बैठना होगा. बट अभी के लिए
ये मैचअप के ऊपर ध्यान देते हैं। कैप्टिविया लेफ्ट साइड से। अगर हैदराबाद की बात किया जाए तो हैदराबाद का जो टीम है वो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं दिख रहा है, सेम लाइनअप के साथ उतरे हैं। एंड इस बार हम जुड़ चुके हैं वॉर्सी जेनेसेट के साथ। ऑन द हैंड हम लोगों को अक्षत देखने के लिए मिल रहे हैं पेनो 7 के साथ। बट जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, सिर्फ प्रेशर नहीं, बीच से एक पास भी निकाला गया था, बट वैंडेसार आई थिंक उनका बेस्ट सेव था अभी तक का, अगर बात किया जाए इस एरिया पर, इतने क्लोज से। I mean, yeah, the goalkeepers making those saves, they'll be happy as long as it does not go in. But now a chance for a counter attack, almost being built up by East Bengal FC, but instantly well read. And the ball stolen back again by R9. Now with Hakimi, they want to exploit some of that right wing with Jarzinho. And another, card that we have seen Jarzinho being utilized a lot by the pro athletes, and the one version of it was also available as an SPC. Those who slept on it, like me, they're gonna regret. Quite an expensive one, but a totally worth it card, to be honest. But now, as things keep progressing, I think it's not just about individual skills anymore. They matter in that final third, no doubt. We saw that glimpse from Mumbai City FC, but I think it was Crusher who was kind of just showing his individual prowess, playing a more like Carmentica style. But this looks to be a good, promising chance. Jairzinho taking that shot, but Van der Sar making the save again. Both the sides, Van der Sar and both the sides players will be happy with how their goalkeepers have been performing so far. फॉर श्योर। एंड अभी तक वैंडेसार की अगर बात किया जाए, ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक रहा है, क्योंकि अभी तक वैसे फ्लॉस नहीं दिखे हैं कि एकदम गलत मिस कह रहे हैं, जो कि हम लोगों को कॉर्तुआ की तरफ से देखने के लिए मिला था शायद एक बार। तो वो उस जगह से तो हम लोग बोल सकते हैं कि ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं वैंडेसार के ऊपर। बट एज ऑफ नाउ पूरा एंड टू एंड गेम चलता हुआ, बट प्रेशर अभी भी हैदराबाद एफसी की तरफ से ही ज़्यादा बनाया जा रहा है। एक पास एंड मैच खत्म। ओ माय गॉड, इधर एक इंटरसेप्शन आया माल्टिनी की तरफ से एंड कॉर्नर पे जाएगा। देखिए, जब तक ये कॉर्नर से भी क्लियर नहीं होता तब तक तो हम लोग कह नहीं सकते कि खतरा टल चुका है, क्योंकि खतरा अभी भी बहुत जोरदार बना हुआ है। जार्जिनियो टुवर्ड्स रोनाल्डिनियो बहुत पहले निकल चुके थे, तो इसी वजह से हो सकता था इधर। बट देखिए, थ्रो इन किया जाएगा एंड इस जगह से बॉल जा चुका है इस बार इस बंगाल एफसी के तरफ। कोई भी गलती अगर नहीं होता है तो इजीली जो खतरे है उसको टला जा सकता है, लेकिन बन सकता था मौका। बट इस बार के लिए तो बॉल कंट्रोल है इस बंगाल एफसी के पास। Yeah, I mean, right now as the match has been going on, right, we're watching both the players trying to just keep their passing game strong. It's been East Bengal FC, they've been relying on those counter attacks a lot, and this is again another one of those chances being created. Jairzinho just goes in, passes it on towards Ronaldinho, looks for that cutback and wants to take that shot, but sadly misses, as this time another attempt being taken. And the fortress, the wall, whatever you may call him, Virgil van Dijk saving the day yet again for Hyderabad FC. But this looks good. This looks good in terms of East Bengal FC, because they've been promising with their attack, but a little bit of a slippery offside. I mean, I did not see that coming, but well, the AI said to be good. Yeah, and उसी के साथ एक बार फिर से जो प्रेशर बन रहा है, देखिए इधर टाइम दर टाइम वो चेंज हो रहा है। दोनों ही टीम्स काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम लोग इनके प्रीवियस गेम्स की बात करें तो प्रीवियस गेम पे बहुत ज़्यादा एवरेज खेल रहे थे दोनों ही टीम्स, बट इस बार बेहतरीन तरीके से इस कोऑप के अंदर बहुत सारा इम्प्रूव किया है दोनों ही टीम, देख के समझ में भी आ रहा है। बट लेट्स सी अटैक किस तरीके से बनते हैं। एम्बापे को उनके पसंदीदा जगह पे खिलाते हुए, बाय द वे एम्बापे ज़्यादातर वो पसंद करते हैं इंडिविजुअली इन रियल लाइफ की वो लेफ्ट विंग के ऊपर ही खेले, लेकिन उसी के बीच में मौका, बट वैन डर सार वन मोर टाइम सेव करते हुए। मुझे लगता है कि कोई मैचेस में ना गोलकीपर जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने लगते हैं, एंड वो शायद ये मैच है। दोनों ही साइड के गोलकीपर्स बहुत ज़्यादा लाजवाब परफॉर्म करते हुए। Oh yeah, indeed. I mean, the way both the goalkeepers have played so far, like we said, the players would be pretty happy making those crucial saves, and it's still already 35 minutes past into the game.
and we're looking for either of the clubs to finally break the deadlock, which hasn't been done. So really good game of FIFA going on, and East Bengal FC, they clearly understand what's on the line over here. They cannot possibly afford to lose this one. Otherwise, there'll be nothing to fight back or fight for in that third individual matchup. And all right, this is the first of what we are witnessing. I mean, I did not see any red card coming for the players or what possibly had happened in that situation. But these were like the early moments of the game, and with how things went along. And well, I mean, we'll be back. We'll be back. That is all I can say. But to really Yeah. discuss what was going on for so long, I think both the teams or both the clubs were creating enough chances. It was all Yeah. about that conversion. We could smell a goal in the horizon, but we were just on the precipice to kind of get there. Maybe in the second half, we get to see most of the goals coming in, but so far it was sort of an even affair. What do you think? या अभी तक तो बहुत सारे चांसेस बने हैं, लेकिन जो गोलकीपर्स हैं वो कुछ आज बेहतरीन लेवल पे खेल रहे हैं। मुझे पता नहीं कि वो गोलकीपर्स को क्या खिला के लेके आए हैं इस टीम के अंदर, बट उनके गोलकीपर्स बहुत ज़्यादा शानदार परफॉर्म करते हुए दोनों ही साइड के, इवन कोई एक सिंगल साइड के नहीं, दोनों ही साइड के गोलकीपर्स के तरफ से हम लोग को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला है। नहीं तो शायद दोनों ही तरफ से हम लोग को 2-2 अभी तक स्कोर लाइन देखने के लिए मिल सकता था, ऐसे चांसेस बने थे। बट आज जो हम लोग को देख के लग रहा है कि दोनों ही टीम्स अभी तक तो इवनली परफॉर्म कर रहे हैं। कोई भी टीम ऐसा नहीं लग रहा कि दूसरे से आगे निकल रहे कोऑप के ऊपर। सो सिनर्जी वाइज भी अगर बात किया जाए तो उसके ऊपर भी, एंड उसी के साथ पासिंग में भी उतना गलती नहीं हो रहा जितना पिछले मैच में हुआ था। सो ये जो चीज़ें हैं इनका कहने की बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है और इसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करते जाना है, क्योंकि जब बात आता है इधर दोनों ही साइड, जिधर दोनों ही साइड इम्प्रूव कर रहे हैं अपने कोऑप को, तब तो एक सिमिलर पोजीशन पे आ जाते हैं। लेकिन उसी जगह पे अगर हम लोग बात करते हैं जमशेदपुर की, जो कि कोऑप के अंदर धुआंधार परफॉर्मेंस करते हुए दिखते हैं, तो उनके सामने जब आएंगे तब मेनली जो है एक अच्छा खासा जो है चुनौती मिलेगा। बट उसके पहले मुझे लगता है कि अभी के लिए दोनों ही साइड इवनली परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं और यही परफॉर्मेंस को आगे कहीं फॉरवर्ड करना होगा और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। Yeah, I think there have been a few clubs that have been really strong with their co-op games, one of which you already mentioned was Jamshedpur FC. If you take a look at the other contestants also, I think Mumbai City FC have been pretty nice in their co-op games also. And well, to be honest, Bengaluru FC, how can we put them out of the picture? Such a strong team, one of the I think favorites to not just get into the playoffs, but win that entire thing. But yeah, the competition is still fierce. It's still going on. Even Kerala Blasters FC, man, because on pen and paper, when you see Lokmanu and Shubham, two amazing players, quite dynamic personalities, haven't been on the greener side, right? They've been getting a lot of those L's, and this is where that frustration is sort of creeping up. Lately, we saw even Lokmanu express his dissent on how his matches have been. Little unlucky sometimes, a few mistakes defensively. That is one area I think he clearly is working upon, because the next matchup is right on the way, and we know that is going to be an absolutely killer for game. But coming back to this matchup, the entire matchup, if we summarize things of what's been going on, and we saw Genocide absolutely just storm through Beno 7 after Beno 7 had that initial lead, when we were feeling maybe we could witness our first surprise of the evening. But suddenly Genocide just shuns everybody. I was like, I was just playing around, and he comes in the second half, shows his true self. Like, when you go up against playing an RPG or something, you're playing against a very evil boss, and initially you were like, yeah, I can defeat them, and suddenly like, hold on, what did you just say? And that is something that we saw out of Genocide in the second half, and no answers whatsoever. But heading on to the co-op game, I think both of the teams are looking a little bit evenly contested, and we have always raised a concern regarding the co-op games, where it's not just your individual prowess that matters a lot. Rather, it's like how well synchronized you are as a team, how your synergy is, how you're timing those runs of those through passes. Because
Ideally, when you're playing individually, you could just L1 trigger a run and or Hmm. maybe player lock a player and then just give it away. But that's not happening, and it's all about the timing. Let's see whoever figures it out first, whoever makes the least amount of mistakes will win this one. या फॉर श्योर एंड आई थिंक मुझे लगता है कि इस बार इस बंगाल एफसी के लिए जिस तरीके का सिचुएशन बन रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि फर्स्ट मैचअप तो वो हार चुके हैं एंड उसके बाद हम लोग को ओवरऑल 3 गेम के अगर मिला है, अगर ये मैच भी उनके हाथ से निकल जाता है, जो कि अभी तक फर्स्ट 2 गेम के बाद पता चलेगा कि स्कोर लाइन क्या है क्या नहीं, तो उसके बाद मुझे लगता है कि इस बंगाल एफसी के लिए प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक ही पॉइंट है पॉइंट्स टेबल के ऊपर अगर हम लोग बात करें एंड ये उनका तीसरा गेम हो जाएगा एंड तीसरे गेम के बाद भी अगर आप एक पॉइंट के साथ रह रहे हो, सो बाद में जाके कमबैक करना टफ होने वाला है। वी नो कि एक लंबा टूर्नामेंट है, बट ये लंबा टूर्नामेंट आपके दिमाग में अगर चलता रहा कि ये लंबा टूर्नामेंट है, वो लंबा इतना हो जाएगा कि आप शायद खत्म ही नहीं कर पाएंगे टॉप 4 पे। तो इसी वजह से जरूरत है कि आप जितना जल्दी हो सके क्विकली रिकवर करो, क्या गलतियां हो रहा है उसको समझो एंड उसको रेक्टिफाई करो, क्योंकि अगर आप नहीं करते हो देन आपके लिए जो सिचुएशंस है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बन सकता है बाद में एंड उसके बाद शायद आपको पता चल जाए 2 गेम पहले कि यस ये गलती हो रहा था, मैं कमबैक करूंगा, बट आपके पास मौके नहीं रहेंगे क्योंकि आपके मैचेस खत्म हो चुके रहेंगे उस टाइम तक। Yeah, I think this is also very important for Hyderabad FC to get their first 3 points on the board, right? Because this is the second matchup. The first time they went up against Chennai FC, the defending champions, where you've got the likes of Naveen and Karman Tikka. It's going to be such a tough fight. And initially, it all started off with Genocide, just being usual Genocide. Very just rampaged through Naveen, who's the defending champion. Just by the way, took him down 3-0. But things started going south for Hyderabad FC when they entered the co-op game. That is where they lost. That is where they lost that game, and suddenly things got leveled up. And then it was that final face-off. I think it was Warsi going up against Karman Tikka. And I still have glimpses of that game where Karman Tikka had initially scored one, and then Warsi made a comeback, and then there were a few more chances where Warsi could have potentially scored a goal, but sort of failed to do so, and that match ended in a draw. As a result of which, the entire series just came down to a draw, and both of the teams just shared a single point each. So that is something that Hyderabad FC would be looking forward to, and for completely just taking their claim, I think they have to win this game, because you do not want to go to the third game, because then it's again going to be in that 50-50, and clearly you would not want to, being an Hyderabad FC fan or whoever is watching or supporting Hyderabad FC, they would not want to risk it till the third one. So they would want to win this one and move ahead further, because coming challenges are going to be tough. There are so many clubs that have such amazing players, especially one more, like if you talk about Northeast United FC, housing the great Saraj, another defending champion, and Imad, the chocolate boy of eISL, who did not have the best of start, because again it was against Bengaluru FC. But last time when we saw them in action, they showed what they were truly made of. या एंड आई थिंक जिस तरीके से इमाद ने परफॉर्म किया था कामली, बट उनका जो गेम है वो इधर चीख चीख के बोल रहा था यस आई एम द बेस्ट ऑन दिस गेम, तो वो जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा शानदार देखने के लिए मिला था। एंड ओवरऑल हम लोगों को कुछ कुछ टीम्स इधर नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा लाजवाब परफॉर्म कर रहे हैं अभी तक, स्पेशली एटीके मोहन बगान थे काइंड ऑफ लाइक फर्स्ट मैच के बाद, बट आज के मैच के बाद भी टाई सी सिचुएशन में जा चुके हैं। बट उनको छोड़ के अगर हम लोग बात करें मुंबई सिटी एफसी, बेंगलुरु एफसी, उनका अभी मैच बाकी है, क्योंकि शायद इसके पहले सिर्फ एक ही मैच हुआ था उनका जिसपे वो जीते थे। एंड ऑब्वियसली उधर सारांश वर्सेस चरणजोत का मैच तो हम लोग भूलेंगे नहीं कभी भी, क्योंकि जिस तरीके से 2-0 के साथ खत्म हुआ था एंड लाइक ये एक मेमोरी रहेगा। बट ऑन द अदर हैंड हम लोग बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड बहुत ज़्यादा शानदार कहने के जो है वो खेल के गए थे बाय द वे, लाइक जिस तरीके से उन्होंने कल पिछले दिन परफॉर्म किया एंड इस बंगाल को 3-0 के साथ, लाइक ओनली ऑन नॉट गोल स्कोरिंग, 3-0 मतलब तीनों के तीनों मैचेस जो है वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीत के खत्म किया था, तो उससे तो उनको जो है बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिला होगा। बट ऑन द अदर हैंड इस बंगाल एफसी उसके बदौलत अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ चुका था एंड आज भी शुरुआत जो है वो प्रेशर के साथ ही हुआ है। एंड आज का जो सेकंड मैच हम लोगों को चलता हुआ दिख रहा था इधर को ऑफ गेम के ऊपर, वो को ऑफ गेम
कोई कौन से तरफ जाएगा वो जानना मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा हुआ रहेगा। एंड सिर्फ नॉट मेरे लिए, मुझे लगता है कि हैदराबाद एफसी के जितने भी फैंस हैं एंड ईस्ट बंगाल एफसी के जितने भी फैंस हैं, ओके सब ही सोच रहे होंगे कि सिचुएशन जो है वो क्या बनने वाला है, क्योंकि हैदराबाद एफसी वही नो कि एक ड्रॉ के साथ शुरू किए हैं, लेकिन वो ड्रॉ एक पॉइंट का ही होता है। कब वो मैच इधर किधर चला जाएगा और आप अगर हार जाते हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एंड आप 2 मैच में सिर्फ एक ही पॉइंट के साथ रहते हो, फिर वो भी आपके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अगर ये भी ड्रॉ के साथ खत्म हुआ देन लास्ट मैच विल बी द डिसाइडर। यस। मुझे तो लाइक वो मैच बहुत बहुत ज्यादा मजेदार होगा, मुझे तो लग रहा है ऐसा। हाँ, ये अंदर का फैन वापस से आ गया है टीटी के अंदर। ये तो चाहते हैं कि ना जैसे लेफ्ट राइट होके कुछ तो ईस्ट बंगाल एफसी जीत जाए, but we never know, anything can possibly happen. And yes, again apologies for the delay. The match is just about to again resume or begin, whatever production deems fit. But for all the viewers, for all the general viewers who love watching love watching the ISL, and I'm wondering what's going on. Again, this is the eISL, electronic version of it, where we've got 11 clubs participating, 22 players, so every club has 2 players each, and it's played on FIFA 23 on the PlayStation 5, where it's a different game. You've got not the real players from the ISL, but an unlocked account where you could have whatever card you pretty much want. And all these players, given the chance, they've gone for the best players. But yes, we are finally back, resuming with the game. It is 38 minutes already passed by, and Hyderabad FC, well, they are going to keep possession on the ball with Mbappe. It could have been a little cheeky, but thankfully dealt with as East Bengal FC decide to launch a counter attack. Yeah, for sure. And as of now, Ronaldinho बॉल लेके भागते हुए लेफ्ट साइड के ऊपर एंड प्रॉपर कंट्रोल में भी है। विएरा, ओ माय गॉड, व्हाट अ स्किल मूव! बीच से चीर फाड़ के अंदर की तरफ आए, लेकिन वैंडे सार का वो सेव वो बहुत ज्यादा क्रूशियल था इधर हैदराबाद एफसी के लिए। Oh yeah, indeed. I mean, this is looking really interesting right now. Finally, East Bengal FC, they're like not backing off. They know who they're up against and how to pierce through their defenses, and they're trying, doing whatever it takes. This looked to be a good chance. For a moment, I felt could have been offside, or maybe even the players also felt that, because we kind of saw that little bit of reluctancy set in. And that being said, the halftime whistle finally blows, and now we're in that impasse where it is halftime, it's heading on to the second half. We have seen that these players can stage a comeback, and morely favored on Hyderabad FC's side, because let's be honest, they had been the better team in that individual matchup. But inside a co-op, anything could possibly happen. जी हाँ, एंड 45 मिनट्स के बाद अभी तक जो हम लोग को बीच में गैप के बाद मैच चालू होता हुआ दिखा, उसके बाद तो काफ़ी शानदार तरीके से परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला है ईस्ट बंगाल एफसी की तरफ से। बट एज ऑफ नाउ हाफ टाइम के बाद राइट टू लेफ्ट इधर अटैक करते हुए दिखेंगे ईस्ट बंगाल एफसी। ऑन द अदर हैंड हम लोग को लेफ्ट टू राइट जाते हुए दिखेंगे हैदराबाद एफसी। बट देखिए इधर विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा खेला जा रहा है, पिछले बार भी रोनाल्डिनियो के साथ किया जा रहा था, इस बार एम्बापे। सो या विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है इधर हैदराबाद एफसी के ऊपर। Indeed, and for now, I mean, both these teams, they've been kind of utilizing their wings, and all right, Hyderabad FC did manage to find a good through pass, but this time the pass was in a hurry, and could have waited for R9 to have made that run before sending it for a pass. But now I think well, the players of East Bengal FC again on their toes every single time, because they know they can't give that single sliver of opening also. And a long pass just made to switch the sides around, and this looks promising with Pele, tries to make a run, good Hullet, and we've got a Hullet also from Hyderabad FC. This is where Hyderabad FC do not have the best of numbers in terms of their attacking positions, but now they've decided to go for a few back passes, again just reshuffle the play, try to keep the passing game on, look for those important passes. And again, oh, the ball stolen away. Now this could be interesting. And look at how calm, the players of East Bengal FC are playing. They're still making those runs, but ensuring that they've got a man. But this time, not going to be the same case, as Pele receives the ball and instantly
takes a shot, and there you have it. Just when we were thinking that maybe this could go a little bit more longer, it took almost 60 minutes, but Hyderabad FC have finally found an opening. जी हाँ, एंड उसी के साथ जिस तरीके से ओपनिंग मिला है, बहुत देर से एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन चल रहा था अक्षत एंड बेनो 7 के बीच में, बट वो कॉम्बिनेशन को बीच से तोड़ा गया, बॉल को पीर्स किया गया था, बट इस बार अटैक बनता हुआ इसमें गोल एससी की तरफ से, लेकिन वर्जिल वैन डाइक फिर से एक बार वो बीच में आएंगे पास के, एंड उसी के साथ खतरा टल चुका है, बट काउंटर पे बढ़ते हुए बहुत पेस के साथ काउंटर पे जा चुके हैं हैदराबाद एफसी। हालांकि उनके पास थोड़ा कम है पोजीशनिंग, अगर हम लोग बात करें अभी तक इस पूरे गेम के अंदर पोजीशनिंग थोड़ा कम है, लेकिन जो सक्सेस रेट है वो सादा देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि गोल ऑलरेडी स्कोर कर चुके हैं। एक बार फिर से मौका बनता हुआ रोनाल्डो वो करते हुए अंदर की तरफ जा रहे थे, लेकिन बॉल छीना गया उनसे। All right, so now for where we are at, Hyderabad FC again building that attack. Oh, beautiful pass towards Ronaldinho. Tried to go for a quick step over, but eventually Hakimi just charges at his direction and stops it. And this is where, East Bengal FC, they are desperate. They want a goal. They at least want to equalize. Maybe then look for a draw into the entire series. Cannot afford to lose this game. That is what, or that is how the stakes are high for them. But that was a good run from Mbappe. I thought he could pass on towards him, but decided to go for Capdevia with Ronaldinho. A beautiful step over yet again, trying to get in through, but no, will not succeed, as now a pause has been taken. Now, this is an interesting formation, 4-1-2-1-2. I think this is something that you know East Bengal FC, they've been experimenting a lot with those formations, but Hyderabad FC just sticking to what the meta is, and they're going on, and it's been working out for so long. But if you take a look at the possession stats, CT, I think both of these teams are evenly tied. Both of those teams have taken the same shots. It's a very close encounter, but Hyderabad FC have just been one step ahead. या एंड आखिर के कुछ टाइम पे जिस तरीके से इधर पोजीशनिंग इम्प्रूव हुआ है वो बहुत ही अच्छा है, एंड हैदराबाद एफसी फिलहाल के लिए काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हुए, बाय द वे पासिव्स उतना कुछ ज्यादा देखने के लिए नहीं मिला ऑल ओवर द गेम, पर ट्रिबलिंग सक्सेस रेट, शॉट एक्यूरेसी के मामले में हैदराबाद एफसी इधर एक्यूरेट तो उतना नहीं थे, दो में से एक शॉट ऑन टारगेट था और वो गोल था। ऑन द अदर हैंड दोनों में से दोनों शॉट ऑन टारगेट रखने के बावजूद इस बंगाल एफसी की तरफ से गोल्स नहीं आ पाए थे, क्योंकि वैंडे सार के ब्रिलियंस था उधर, तो इसी जगह पे मात खाते हुए इधर इस बंगाल एफसी। बट लेट्स सी ये जो पॉज लिया गया है, इस पॉज के बाद क्या कुछ नया करके दिखा पाएंगे, क्या इनके पास प्लान बी या फिर प्लान सी अभी मौजूद है कि नहीं, क्योंकि अगर इस पे ड्रॉ नहीं किए देन इट विल बी ओवर। नेक्स्ट मैच में कुछ भी हो रिजल्ट, ये जो पूरा सीरीज है वो जाने वाला हैदराबाद एफसी के तरफ, अगर इस मैच में ड्रॉ नहीं आता है तो। सो ये मेक श्योर करना होगा कि इधर एटलीस्ट एक गोल दागा जाए एंड कोई भी गोल कंसीड ना करे, बट बेलिंगम ऑन द पिच एंड बाहर जाएंगे वेरा। All right, now let's see. We are on with after those few changes being made. And East Bengal FC, this could be an attack. As you can see, Pele, he's making a run. This is the golden chance. Instantly decides for a ball roll, then shuffles it towards Ronaldo. Takes a shot, but Van der Sar puts his body out, makes that stretch, and defends it, and goes out for a corner. A short one being taken. Pele lobs the ball through, but Van der Sar enough, just present over there, and saves Hyderabad FC from conceding that goal. And I think we have seen, both the goalkeepers, like we discussed, playing really well for their respective clubs. And huge props to that, because I felt R9, that shot could have gone in any day, any time. But maybe did not green time it, or rather just preferred not timing the shots. Because we see a lot of these pro athletes usually, green timing their shots, and it kind of increases that pace, increases that accuracy of the shot, and just sharply increases the chances of the goal getting scored. So as we stand, barely 15 more minutes remaining into the game, and this could just be
anybody's game right now. I mean, I still feel that East Bengal FC, if they utilize a counter attack or something like they just almost did right now, they could score one more in. या एंड पिछले कॉर्नर पे एक का मौका बना था, देखिए गोलकीपर को थोड़ा आगे लेके आए थे हैदराबाद एफसी की अगर बात किया जाए, तो उस जगह पे एक ओलंपिक गोल होने के चांस थे, जिधर से एकदम डायरेक्ट कॉर्नर से गोल के अंदर दागा जा सकता था। हालांकि वो बहुत सारा टफ है, लेकिन अगर आपके गोलकीपर गोल पोस्ट के बाहर है तो यू कैन ट्राई, क्योंकि अभी तक कोई भी चांस नहीं हुआ है कन्वर्ट। तो अगर आप कन्वर्ट करने के लिए कुछ अलग अपनाते हो तो मुझे लगता है कि वो और भी ज्यादा एग्जाम के सामने लेके आएंगे। बट इस बार मौका बनता हुआ इसमें गोल। नो, आज ये वैंडेसार नाम का दीवार हटने नहीं वाला है हैदराबाद एफसी के गोल के सामने से। जितने भी शॉट्स अभी तक लिए गए, शॉट ऑन टारगेट जरूर रहा है, लेकिन वो हमेशा हमेशा सेव करते हुए दिख रहे हैं इधर वैंडेसार। I mean, just when we were thinking that maybe Virgil van Dijk could be beaten, there is that impenetrable fortress in the form of Van der Sar. And how has he been performing? And now this is where with Haaland trying to make a run, passes it on towards Mbappe, had a little bit of room, but Rudhulit for East Bengal FC instantly charges in, and now another chance for a counter-attack. Both these clubs are just going all out, right? We are seeing the attacking line being pressed so high, and for East Bengal FC, they've been making those few mistakes in those final thirds, but maybe not this time, or maybe they just did, because that went out for an offside. जी हाँ, एंड इसके पहले जब जिस जगह पे जार्जिनियो उधर बॉल जीते थे, आई डोंट नो व्हाई थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेते हुए दिखे, उसी टाइम पे अगर वो एडवांस कर जाते मे बी इधर एक बहुत ही अच्छा मौका मिल सकता था, क्योंकि ऑलरेडी शायद रोनाल्डिनियो एंड रोनाल्डो दोनों ही रन निकाल चुके थे। एम्बापे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वो भी रन निकालना जो शुरू कर रहे थे। अगर पास चला जाता जार्जिनियो की तरफ से फर्स्ट टाइम, तो मे बी इधर एक कन्वर्जन देखने के लिए मिल भी सकता था। थोड़ा तो जो है वो जल्दी हरी अप करने की जरूरत है, क्योंकि आखिरी 6 मिनट, और ये 6 मिनट पे अगर एक भी गोल नहीं आता है देन मैचअप इज ओवर। लाइक या इसके बाद एक और गेम हम लोग देखेंगे, लेकिन उसका आउटकम इस पूरे ऑल ओवर मैचअप के रिजल्ट से कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। सिर्फ वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस या फिर इंडिविजुअल स्टैट के लिए खेला जा सकता है, या फिर जब ड्रॉ होगा वो तो बहुत लेट की बात है। बट इस बार देखिए लेफ्ट हैंड साइड से मौका बनाने की कोशिश था, हालांकि कंट्रोल नहीं रख पाए। Oh, it just went out. I felt for a moment could have been a different case, but come on, let's get back into the game. And this could be that last potential attack from East Bengal FC, and they have to put it all in with Theo Hernandez making that run, just whizzes past the two defenders. But there you can see instantly catching up, pass on towards Hullet, but no. And now this is where Hyderabad FC, I thought for a moment they would not want to let go of the possession. But again, we are back to what could be the last attack of the game. And with Pele, passes on towards Rudhulit. Pele again just trying to get through, but Bellingham, now they're just going to play around the edges. But I think this match might have possibly come to an end, or maybe not, because it's the second time we are witnessing such a thing happening. And you know, at that point, you could clearly say it was sort of done and dusted for the players of you know, East Bengal FC, because Hyderabad FC had the possession, and you know, I have done this in my Foot Champs game a lot. Like when I have the lead, just play along the lines, right? Because either ways, either you just go for a tackle, then it's going to be a goal kick, or maybe a throw in if you're on the sideline. So that is pretty much the case, and you anyways won't get a possession after that. So I mean, it was an end-to-end matchup where we saw a few you know, beautiful counter-attacks, but all foiled by the great Van der Sar, the Dutchman coming in rescue and saving Hyderabad FC. And if it goes the way it went, if the scores are right in front of us, there you go. Genesed and Warsia finally managed to win their co-op game, narrowing a narrow victory against East Bengal FC. And that secures their 3 points. So like you said, TT, no matter what the outcome will be for Akshat and Warsi's game, it is already 3 points in the bag for Hyderabad FC. For sure. And ये गेम के बाद
एक चीज तो कह सकते हैं कि यस कोऑप पे इम्प्रूवमेंट तो बहुत ज्यादा हुआ है, बट थोड़ा अनलकी थे इसमें गलत से, क्योंकि वैंडेसार के जो सेव्स थे वो आउट ऑफ द वर्ल्ड था। एंड जिस तरीके से पाक टू बैक सेव आ रहे थे वैंडेसार की तरफ से, मैं अगर होता तो शायद मैं, जो कि मैं यूजुअली करता हूँ कंट्रोलर तोड़ मेरे देता। नहीं, मैं कंट्रोलर नहीं तोड़ता, फिर खरीदने में प्रॉब्लम होता है, मैं गेम बंद कर देता हूँ नहीं खेलूंगा मैं, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। Yeah. और बट या देखिए इधर जिस तरीके के सेव किया गया था, लाइक जो सपाट वैंडेसार वी नो कि कितने बेहतरीन गोलकीपर है, और उस जगह पे इतने बेहतरीन गोलकीपर अगर आपके लिए इस तरीके से खड़े हो जाते हैं, फिर ऑब्वियसली मुश्किल होता है। बट एक भी शॉट हम लोग बॉक्स के अंदर से नहीं देखे, ये चीज के ऊपर भी ध्यान जरूर देना होगा। एक शॉट था जो कि बॉक्स के अंदर से था, उस पे भी टर्न करके मारने की जरूरत था, जिधर बहुत क्लोज आ चुके थे तो एंगल ज्यादा मिला नहीं शॉट लेने के लिए, और बाकी के जो 2 शॉट्स है वो था बॉक्स के बाहर से, तो इसी वजह से थोड़ा शायद एक्स्ट्रा टाइम मिला होगा। बट जो भी है, लाइक मैच तो इधर हो चुका है एंड अप, एंड इसी के साथ एक तरफ 3 पॉइंट जाने वाला है। बट आखिरी गेम अक्षत के पास एक बहुत बेहतर मौका है, क्योंकि देखिए पिछले 2 गेम से उनका कुछ फॉर्म खास गया नहीं है। हालांकि बेनो 7 की अगर बात किया जाए, उनकी तरफ से हम लोग को थोड़ा बहुत कमबैक देखने के लिए मिला था। अगर हम लोग बात करते हैं एकदम फर्स्ट डे पे, तो उनका ही वो गेम था जिसके बाद हम लोगों को कमबैक देखने के लिए मिला था एंड एंड अप विद अ ड्रॉ। बट अक्षत के लिए आज एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि विदाउट प्रेशर वो खेलेंगे, क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कुछ भी आए रिजल्ट। अगर आज वो जीतते हैं तो मुझे लगता है कि एक प्रॉपर फ्लो में आ सकते हैं नेक्स्ट डे से मे बी। Yeah, I think a very, you know, very important game for Akshat, to be honest, like you just said, because now he's got nothing to lose, right? They've already lost the game. This is where he can play his freestyle FIFA, and same can be said for Varsi. Both these players just kind of waiting for Yeah. their win, because the last encounter for Akshat was a bit of a tough one. You know, when you're going up against a mammoth like Saransh, it's never going to be easy, right? And still he managed to Yeah. score 2 goals out of Saransh, which we felt like that's not gonna happen. That's not gonna happen. And Saransh was absolutely dominating that first half. But Akshat somehow managed to find a few जी. openings in his defense, and he capitalized back then. But now, like you said, right, that was, I guess, the first matchup of that entire match. So that was a different story. Now we're in that junction where East Bengal FC have humbly accepted their defeat. Now, no matter, like we've already discussed, viewers, that whatever the outcome shall be for Akshat against Varsi, regardless, Varsi and his team, and his club rather, have got a victory. So those 3 points are secured. So these players will just be, playing for fun, just to chill. And this is where I think we won't see Varsi sweating out a lot, because he usually does that on his stream. So Varsi is more like, that very calm, chill guy who just goes on to play, foot champs game, and suddenly he finds an opponent very ratty, very sweaty. So by ratty is, you mean, completely going try hard, getting as many meta players, using PAPL, that is what we call is pressure after possession loss. When you see that one player has the ball and suddenly, your defenders charge at his direction, Yeah. and kind of causes in excess fatigue. But if you have bench players like Haaland, then you've got Alphonso Davies, such good bench players, you don't care about that. And sometimes, in eISL, not sometimes, more often than not, everybody sweats it out, because this is the epitome of the competitions that we have across India right now, the biggest one so far in FIFA 23 that's going on, with such a staggering prize pool. But yes, so now Varsi will be happy. I don't have to sweat it out. I just have to chill and play, because the first game, it was done and dusted. The second game, the co-op game for them, however, was something of a roller coaster. Like we mentioned, we Yeah. saw East Bengal FC. They were really, good on their counter attacks. But there came a few moments where I kind of felt that they were just beating around the bushes, like in multiple situations where even when they were close to the goalpost, they were going for crosses. And I think it was twice or thrice where Van der Sar used to make that save easily, and where they could have maybe made a back pass, something like what Genesis does, right? He's calm, he's patient. That composure was sort of missing from East Bengal FC side. Had they had it, like you also said, they were taking a lot of shots even outside the box. They were looking very desperate.
and those are not signs of a very composed player. And when you're going up against the likes of Genesid and Varsi, you have to ensure that you've got your best foot forward, you are playing the best FIFA, and that really matters a lot. But in the meanwhile, we'll just get started with the next game. But as things stands right now, viewers, so we've got to say this, ATK Mohan Bagan, in fact, East Bengal FC, they've been struggling trying to get a win. Hyderabad FC have finally gotten their win. FC Goa and Mumbai City FC, they'll be really happy with where they are, especially if you're an FC Goa fan, if you're a Gods fan, you know that you're right on top of the leaderboard. Bengaluru FC going up against Kerala Blasters FC is up next, to where I think Bengaluru FC would be looking to clinch their top spot in the leaderboards, and Kerala Blasters FC will be eyeing out for their first victory in the eISL. They've already played 2 games. They haven't managed to secure either a draw or a victory. So this is high stakes game for them. They have to win it. But like we have discussed, it's going to be a very tough matchup. Well, when you're talking about CJ and Shagnik being included in the equation. But yes, now heading forward to that third game, TT, what are you expecting? Any predictions on the scoreline? या ऑब्वियसली लाइक मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि शायद बेंगलुरु एफसी जीत के जा सकते हैं मैच को, क्योंकि No, उनके I'm talking पास about this 20 matchup. This matchup, the third game. The third game. ओके द थर्ड गेम आई थिंक इधर प्रेडिक्शन तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वॉर्सी की अगर बात किया जाए उनको मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, उनके साथ बात भी होता है मेरा, एंड ऑन द अदर हैंड रहने वाले ईस्ट बंगाल, सो या कोई भी तरफ मैं नहीं जाने वाला, बट मुझे लगता है कि गेम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जाएगा, क्योंकि अक्षत की अगर बात किया जाए उनके ऊपर भी प्रेशर नहीं है, एंड ऑन द अदर हैंड वॉर्सी जो पिछले दिन लाइक बहुत ज़्यादा प्रेशर में खेल रहे थे, क्योंकि आखिर में जाके लाइक शुरुआत में जो लास्ट मैच ही खेल रहे थे वो, एंड शुरुआत में वो पिछड़ गए थे 1 गोल से, एंड उसके बाद जब अप्लाई किया तो ये उनका जो एक्सपीरियंस है, तो यार मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, एंड लेट्स सी लाइक क्या होता है, प्रेडिक्शन कुछ भी नहीं रहेगा मेरे लिए। All right. I mean, you're playing the diplomatic card over here, so did not opt for one. Next time, I'll make sure I get a prediction out of you. But the game has begun already, ladies and gentlemen. It's East Bengal FC from left to right, again in their white kit, against Hyderabad FC in their blues from the right to left. It's Varsi, and you can see, he's if you've been following us from eISL season 1, Varsi is bulked up a lot. He's also been grinding a lot in the gym, has built all those biceps up, and now looking forward to his first goal in the game as of now with Mbappe. A beautiful pass intended towards R9, but did not quite happen as Akshat manages to fend the attack. एंड आई थिंक मुझे तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एंड टू एंड गेम होगा ये भी, जिस तरीके से पिछले 2 गेम्स गया था उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इंटेंट तो सेम रहेगा, बट अक्षत बीच से पास निकाल गए थे, बट ये कुछ ज़्यादा ही लंबा पास के लिए जाते हुए दिखे थे, क्योंकि रोनाल्डिनी ऑलरेडी रन निकाल चुके थे, इधर एक थ्रू बॉल था, बट बॉल तक हकीमी पहुंचने से पहले इधर पहुंच गए थे वन डाइक, बट फिर से एक बार अटैक बनता हुआ हैदराबाद एफसी की तरफ से, कैप्टेविया का यूज हम लोग को हैदराबाद की तरफ से फिर लाइक शुरुआती में टूर्नामेंट के शुरुआती की अगर बात किया जाए तो नहीं हो रहा था, एक डेंजरस सिचुएशन बन सकता था जो कि बन भी गया था, बट लूशियो उस टाइम पे सेवियर का रोल अदा किए, दैट्स व्हाई इधर अभी भी जो स्कोर लाइन है वो 0-0 पे ही अटका हुआ है, नहीं तो बढ़ भी सकता था। एम्बापे थोड़ा अगर और जगह मिलता आई थिंक एम्बापे इधर निकाल सकते थे, बट नहीं, बहुत क्लोज थे इधर वेन डाइक। It was, the run was timed perfectly. Both the players did not cross that offside line, and we felt that maybe if one of the players had just charged in on that run, but it happens. It's quite common, and what's also common is Virgil van Dijk's saves like that. Just the right interception at the right point. Mbappe was making a beautiful run, but no, Van der Sar just steps ahead and makes a rescue for East Bengal, in fact for Hyderabad FC there, as now Varsi looks to propose an attacking threat, but again
threat averted by the players of East Bengal FC and Akshat feeling a little calm. I think both these players, we thought that they won't be sweating, but they indeed are just trying their best, trying to find that opening and try and score a goal. And this is a beautiful through pass with R9, that little pace dip over there, that's gonna hurt him. And there you go. जी हाँ, क्या शानदार इधर शुरुआत हुआ इस मैच का। एंड मौका अभी तक बहुत सारे बन चुके थे हैदराबाद एफसी की तरफ से, बट कन्वर्जन अभी तक नहीं दिखा। क्या वो होगा? एंड अभी तक पासेस भी निकालने की कोशिश किया जा रहा था ईस्ट बंगाल एफसी की तरफ से, बट वो उतना ज़्यादा क्लिनिकल नहीं हुआ था। बट इस बार कैप्टेविया बेहतरीन रन निकाले थे मिडफील्ड के ऊपर 1-2 करते हुए। एंड एक बार फिर से पीछे लेके जा रहे हैं। मुझे इंटेंट काफ़ी सही लग रहा है इधर वर्सी की अगर बात किया जाए, वो ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे। मौका बनता हुआ एम्बापे, रोनाल्डो एंड जस्ट वन टच खींच के लेके आए, गोलकीपर जंप किया एंड जस्ट इधर बीट किए वेंडेसार को। वेंडेसार को अपने इशारों पे नचाए रोनाल्डो ने। एंड क्या शानदार परफॉर्मेंस वर्सी की तरफ से। अक्षत, उनको थोड़ा देखे खेलने की जरूरत, क्योंकि ऐसे मोमेंट पे आप अगर अपने गोलकीपर को इतना ज़्यादा एडवांस करा दोगे जिधर आपके डिफेंडर्स भी मौजूद है आसपास, आपके लिए मुश्किलें तो क्रिएट होगा। Yeah, I think that was a very calmly composed goal by Varsi, and right now Akshat wants vengeance, but the run did not support his intent. So I think what I liked about Varsi in that previous goal was, like you said, how calmly he was playing. Something that Genesis does quite often, does not shy away from just shuffling the ball, recycling it if necessary, finds that opening, and then when he finds that, yes, this is that sliver I was looking forward, this is that window of opportunity, he goes for the shot. But this time I felt he could have scored maybe with Jarzinho there. I mean, was unnecessary for trying to go for that extra one pass, but it's all right. I mean, this is something that Varsi can afford, and he's pretty much slowly creeping on and taking control over this game. Akshat seems a little rattled, because giving away ball like this, which could be heavily punished, with R9 making a run and directly going for the shot and scoring with his left foot. Varsi knows that he has gotten the job almost done. 2-0 up already with just 35 minutes into the game. I can smell a lot of goals on his way. What a performance! क्या लाजवाब परफॉर्मेंस रहा है अभी तक का हैदराबाद एफसी की तरफ से। एंड स्पेशली वॉर्सी जिस तरीके से खेल रहे हैं आज इस मैच के ऊपर, वो देख के ऐसा लग रहा है कि वो दिमाग के साथ खेल रहे हैं अक्षत के। एंड उसका शॉट एक्यूरेसी की अगर बात किया जाए, जीरो है इस बंगाल एफसी की तरफ से, क्योंकि उनकी तरफ से शॉट ही नहीं लिया गया था। एंड वो मौका नहीं बनने दिया। पहले इधर आते हुए दिखेंगे ग्राउंड के अंदर, बट किसके जगह पे वो भी बहुत जल्दी हम लोग को इधर पता चलेगा। सो ओवारन को लेके आ गया लुशियो की जगह पे। एंड शायद बहुत जो चेंजेस है वो देखने के लिए मिलेंगे। बाय द वे आगे ओके, तो ओवारन आए थे, नॉट पेले। एंड लुशियो को इधर है ऐसे अटैक पे ज्यादा प्लेयर्स इंक्रीज करने की कोशिश बहुत क्रूशियल था वैसे ये टच। Yeah, I mean, this is why, Van Dijk again, one of the reasons why he's one of the best. But this time, Akshat was looking a little deadly, almost went for that shot, but just before he could do anything, was dealt with by Varsi. So now, a little bit of a back pass there, and making sure he could get it on towards the wings now with Theo Hernandez. Trying to make a run there. You can see Bellingham passes it on towards Aloveran. We know this card. He's got that blistering pace, and your defenders would just have their jaws open once he starts, sprinting. But thankfully, the defenders we also have are really quick to catch up to the likes of Mbappe and Aloveran. So it's going to be an even 50-50 matchup. Again, Aloveran has the ball, passes it on towards R9, and this time Akshat takes a shot, but Varsi and his Van der Sar to the rescue yet again. Yeah, and अभी तक जिस तरीके से गेम चला है फर्स्ट हाफ के ऊपर,
शुरुआत में जब तक कि गोल स्कोर नहीं हुआ था तब तक लग रहा था कि यस दोनों ही तरह से लाजवाब गेम चल रहा था, बट देखिए वो चीज़ अभी नहीं हुआ। फर्स्ट हाफ हो चुका है खत्म एंड उसी के साथ साथ इधर फर्स्ट हाफ के एंड पे एक चीज़ तो पता चल चुका है, ये अक्षत को ज़रूरत है कामली परफॉर्म करने का एंड उसी के साथ जो गलतियां उनके तरफ से हो रहा है वो गलतियां नहीं दोहराने का, वो बार बार दोहराते जा रहे हैं एंड ये चीज़ इनके लिए मुश्किलें क्रिएट करते जा रहे हैं। सो ही हैव टू मेक श्योर कि वो इधर और गलतियां ना करे, एटलीस्ट गोल कंसीड ना करे एंड उसके बाद वो थोड़ा कामली इधर कोशिश करे कि वो गोल स्कोर कर सके। तो एक ही शॉट लिया गया था थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ एंड वो गोल नहीं हो पाया। पासिस के मामले में अगर देखा जाए तो पासिंग एक्यूरेसी बहुत बहुत ज़्यादा शानदार रहा है अभी तक हैदराबाद एफसी की तरफ से, वॉर्सी की तरफ से एंड वॉर्सी वो हर एक अपॉर्चुनिटी को कोशिश कर रहे हैं कि वो इधर कन्वर्जन निकाले, उससे कन्वर्ट करे उसको एंड इसी वजह से शायद 2-0 से वो आगे है अभी। Yeah, I think Varsi, he's being just a better player in that first half, right? We witnessed him multiple times, being very composed, very calm with what he intends to do. We have seen him create those, driven through passes, and he goes for that second variation of that. Ideally, you see L1, R1 and triangle, that's a normal driven through pass. But when you pass it along to a player and you trigger a run already, and the moment you get the pass and then instantly, that is a more effective way of driven through, which is very difficult to read, and is quite effective, used by a lot of professional players, and he's also one. So of course you would expect these types of moves coming in from Varsi. But now we head on into the second half. This is where Akshat needs to stage a comeback and needs to get himself inside the game. A good chance already being built up by him. जी हाँ, बहुत शानदार एक चांस फिलहाल के लिए बन रहा था बट एक बार फिर से ऑफसाइड ट्रैप पे फंसते हुए एंड ये शायद दूसरा या तीसरा ऑफसाइड था जो कि हम लोगों को इस बंगाल एफसी की तरफ से देखने के लिए मिला है, बट बहुत ही सही मोमेंट पे इधर बॉल चुराया गया, हकीमी की तरफ से इंटरसेप्ट किया गया था। मौका बन रहा है इस बार, एक बहुत ही अच्छा मौका है रोनाल्डो एम्बापे फिनिश करना होगा एंड वो करेंगे भी, कोशिश था अभी तक एंड फाइनली कमबैक के राहों पे एक पैर आगे बढ़ाते हुए ईस्ट बंगाल एफसी एंड उस जगह पे एम्बापे के पास जब बॉल पहुंच गया था पूरा खाली था, कोई भी डिफेंडर नहीं थे एंड या रिजल्ट गोल के साथ आता हुआ एंड 2-1 हो चुका है हैदराबाद एफसी, अभी भी एक गोल से आगे बट थोड़ा बहुत गलत पासेस शुरुआत से ही देखने के लिए मिल रहे हैं वर्ची की तरफ से। Yeah, and now this could be another one. A beautiful chance, take the shot. Oh, Virgil van Dijk saves the day for Varsi there. I almost felt that was a goal. And no wonder, I mean, Akshat might be feeling gutted with his chance missed, but no, he has no time to breathe. Going in again with Theo Hernandez will take the shot, and this time, the equalizer is here. Did not give Varsi a moment to breathe. And suddenly, East Bengal FC, they are roaring. With the beginning of the second half, Akshat knew what he had to do, and suddenly he strikes two in quick succession. And Varsi left with his jaws open with what just happened to him right now. And like mainly Akshat just turned his game and वो कोशिश यही कर रहे हैं अभी कि वो ग्राउंडेड पास से भी ज्यादा वो यूज करें लॉफ्टेड पास, जिसका प्रॉपर फायदा दोनों के दोनों गोल्स पे हुआ है। पिछली बार भी एक पास गया था जिसके थ्रू एम्बापे के पास गया एंड उधर से पूरा अटैक बना, और इस बार भी हम लोगों को देखने के लिए मिला लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जिधर हम लोगों को आखिर में थियो हर्नांडेज फिनिश करते हुए दिखे। सो ये जो लॉफ्टेड पास है ये बहुत शानदार है, एक बार फिर से थ्रू किया जाएगा, राइट साइड से रन निकालते हुए बट उस एरिया पे मौजूद थे थियो हर्नांडेज इस बार और मौका नहीं बनाने देंगे। बैकलाइन के बाहर गया बॉल बट प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है हैदराबाद एफसी के ऊपर। Oh, indeed. And now Hyderabad FC really need to recollect their thoughts, and Varsi has got to do something about it, because Akshat, he is steamrolling at this point. He's making sure his defenses are sturdy, and now he's on his offense. Also, he has worked so much with Mbappe. That shot being taken could be poached over by Ronaldinho, but thankfully Hakimi comes in and saves the day. Varsi could have had that lead, but beautiful
defensive awareness being shown by Hakimi there. And now Akshat again trying to build up his attack as the ball again being stolen away. That's a beautiful one touch through. And let's see where can Akshat go with this one at least. With Mbappe, we know he's got that rampaging pace. And oh, he'll bit of a pause and then instantly tried to just cut in through the defenders, but was again well read by Akshat, or rather Warsi. ओह, जितना टाइम बढ़ता जा रहा है उतना ही ज्यादा प्रेशर सिर्फ दोनों प्लेयर्स के ऊपर नहीं उनके फैंस के ऊपर भी बढ़ता जा रहा है. क्या होगा रिजल्ट वी नो, लाइक फैंस जो एकदम चुके इस गेम के अंदर उनके ऊपर तो प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन जो ऑल ओवर लाइक पूरे सीरीज के स्कोर देख रहे हैं उनके ऊपर नहीं बनेगा, क्योंकि हैदराबाद एफसी ऑलरेडी लाइक 3 पॉइंट्स के साथ निकल चुके हैं. लेकिन ये गेम जीतना अक्षत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अलोवारन के लिए थ्रू बॉल खिलाया गया था, पेस पे बीट करना अलोवारन को बहुत टफ है. क्या ये शॉट लेंगे? लेट जरूर हो गए एंड उसी जगह पे इंटरसेप्ट किया जाएगा. सो या शॉट ले सकते थे बाय द वे, लेकिन उन्होंने थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लिया जिसके थ्रू इस बार काउंटर में जाते हुए दिखेंगे हैदराबाद एफसी. I mean, I can't believe. I mean, Akshat should have just taken that shot. I know I'm not the best of finishers, but you have such a nice card, and could have at least attempted, because that him pausing that over in that situation, and all right, a little bit of a delay over here, and yeah, I mean, apologies again for the inconvenience, but at this point, you know, we understand that some things are just beyond our control. But wow, what a play coming in from Akshat in that second half. I mean, especially on those counter attacks, City has been so devastating, and he's been beating Warsi every single time. But just when that previous chance, I thought this was a goal, because with Aloveran and him already leaving the players almost a yard out, I felt that this was a goal coming. I mean, every inch of my body said that yes, this could have been a goal. And I'm not sure. I'll have to check how much are the finishing stats on Aloveran's new card, because the previous foot hero card did not have the best, but still was decent enough. And if you talk about shooting, he's got 90 finish. And if you add it up with Chems, you're not gonna give him a hunter, but if you're giving him a finisher, I mean, that is easily gonna give something like maybe 94, and suddenly this, in fact 99 if you're giving him a finisher trade. Yeah. So still wondering why he did not go for that shot. Back of my mind, I'm kind of like really confused, because that could have been it, right? Because that could have been the perfect one, and Warsi's purely momentum that has been just thrown off the windows. It could have gone off, but yeah, I mean, his choice. Who are we? Yeah, definitely his choice. But इसी वजह से हम लोग उस टाइम से ही डिस्कशन कर रहे थे कि शायद शॉट ले लेते, क्योंकि मैं अगर बात कर लूँ लाइक इंडिविजुअली इस गेम के अंदर, मुझे लगता है कि जो हमारे प्लेयर्स है आईएसएल सीजन 2 के अंदर, वो लॉन्ग शॉट्स नहीं लेते उतना ज़्यादा, क्योंकि उनको लगता है कि शायद जो बॉल है वो मिस हो सकता है या फिर कंट्रोल के बाहर जा सकता है. जैसे कि अगर हम लोग पिछले गेम की भी बात करें, तो पिछले गेम पे, पिछले मैचअप पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसे शॉट्स देखने के लिए मिले थे जो कि आउट ऑफ द बॉक्स था, बट प्रॉपरली टेकन नहीं, लाइक प्रॉपरली उन्होंने शॉट्स नहीं लिया था. लेकिन अगर आप बॉक्स के बाहर से शॉट ले रहे हो और आपके पास उस प्लेयर पे रनिंग पेस है, तो विद पेस विद शॉट पावर और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. और अगर आप एंगल दे सकते हो तो ऑब्वियसली 98 रेटेड कार्ड्स वो फिनिश कर सकते हैं, लेकिन वो शॉट नहीं लिया जा रहा, क्योंकि मैं देखा हूँ लाइक इसके पहले टीम ऑफ द ईयर हॉनरेबल मेंशन में जो हमारे पेड्री आते हैं, वो भी दूर दूर से बॉल जो है फिनिश कर देते हैं. तो इधर तो इनको भी कर, मतलब ये भी कर सकते हैं, बट ये एक अलग पीओवी है. बट जो प्लेयर्स है वो अलग पीओवी से सोचते होंगे. हर चीज़ का जो है वो सोच अलग अलग होता है हर लोगों का, सो वो चीज़ देखना होगा. बट आई थिंक मुझे लगता है जब आपके क्लोज से गोल स्कोर नहीं हो रहे, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप दूर से भी शॉट्स ले लो. और इस जगह पे तो ओवैन के सामने कोई थे ही नहीं,
वो अकेले दौड़ रहे थे, कोई डिफेंडर नहीं था दूर दूर तक, सिर्फ उनको भेजना था वैंडेसार को, जो कि आई नो बहुत टफ है आज के दिन पे, एटलीस्ट जिस तरीके से गेम चला है, लेकिन फिर भी शॉट ले तो सकते, ट्राई तो कर सकते थे। Yeah, I mean, what could have gone wrong possibly? Could have just gotten out for a corner because, हाँ, that little halt over there, that little pause and then, waiting to pass it on. That by that time he did that, all the defenders had come back to their lines and it just became, it went south, to be honest, for him. But let's not be too harsh because Akshat हम्म, has been so phenomenal in that second half, especially when going up against yeah, Varsi, who's 2-0 up already and scoring two quick goals in succession. And that goes on to show that Akshat had already built up such a good momentum against Varsi. And now, we are in that junction that we are still looking for a winner. But for all the viewers who just tuned in, regardless of the outcome of this game, that's not going to impact the overall, match points because Hyderabad FC has already won this tie. They have secured those 3 points and they'll be really elated, happy with it because it's their, I think, second outing and they've drew one game and and won one. So they'll still in the positive sides, and for the playoffs this time we just don't have 4 teams, we have rather 6 teams moving on ahead. So that's another added bonus benefit for all the clubs because last time the competition was so cutthroat. I'll be honest with you, just mere single point digit it came down to. But yes, I mean, for what we have been witnessing and for all those people who have been just tuning in recently, again, a quick summary of what's going on over here. You're watching eISL. I'm pretty sure you all must have been following the eISL that goes on in real life. Now, this is the virtual world where we are playing FIFA 23. That's a new game just released a couple of months back where now all these players are representing their clubs but with unlocked cards. So you've got all these OP cards out there. By OP, I mean overpower. And yes, you can see the final game has also come to a close. The scoreline has been 3-2. Varsi did, however, manage to score one more and successfully. I think we can call this a whitewash for Hyderabad FC. The way they just stormed through East Bengal FC and have now managed to secure those 3 points completely and undisputed. So let's say look at who the MVP is going to be. I don't think there's going to be any doubts over it. It's going to be the man who dominated everybody, especially in the first game against Beno 7, and it is going to be Genesis yet again. जी हाँ, एंड जेनेसिड की अगर बात किया जाए, जितना बात करेंगे उतना ही कम रहेगा फॉर श्योर। लाइक जैसे कि आपने कहा शुरुआती टाइम पे कि आप देखना चाहते हैं चरणजोत वर्सेस जेनेसिड, या मी टू। मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस मैच के लिए। बट यस, जिस तरीके से ये प्लेयर परफॉर्म किया आज के दिन पे, या फिर सिर्फ आज ही नहीं, ओवरऑल जिस तरीके से खेलते हैं, आई थिंक इनसे बाकी जो न्यू प्लेयर्स है या फिर जो शुरू करना चाहते हैं अपने करियर ऑन फीफा, उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। या आप पहले अगर पीछे चले भी जाते हो, अगर आपको शुरुआती पे लीड मिलने के बावजूद अगर आप पीछे चले जाते हो, तो उसके बाद भी आपका कॉन्फिडेंस किस तरीके से बना के रखना है और कमबैक ऐसे करना है मानो कि मतलब ओपोनेंट को और कोई मौका ही ना मिले। तो कुछ उस तरीके का सिचुएशन था। बट यस, इस बंगाल के लिए बहुत ही ज्यादा पैथेटिक एक स्टार्ट होता हुआ, क्योंकि 3 मैच में सिर्फ 1 ही पॉइंट मिला है उनको। Yeah, not really the best of days going on, but hoping so. There will be brighter days up ahead. But that being said, we are finally done with this matchup, and Hyderabad FC have taken home 3 points for themselves. That being said, we are off to a break. We'll be right back. You guys don't go anywhere.